keep in pace with the modern students. So I believe a teacher has to be innovative and resilient, not a stubborn one. If something new has been taught to him, yes, innovative, thank you so much. If something is being taught to him, he should learn it and grasp it with the open hands. So we are not just teachers, we are magicians. We can make things happen. No matter whatever resources we have, we can make things happen. And a teacher has to be innovative, and a teacher has to be resilient, and a teacher should improve him or herself, because we are living in a very new era and we have to make a pace with the students we are teaching. ठीक है, तो टीचर को इनोवेटिव होना चाहिए एंड रिजिलियंट होना चाहिए, stubborn और stagnant नहीं होना चाहिए. And it is a very famous thing that you can't pour from an empty cup. So you need to fill up your cup on your daily basis. Yeah, do you agree with me? Do you think that a teacher should learn to improve? If you need to improve, you need to have lots of things beside you. आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं, आप कोई बुक लाइब्रेरी से इशू करवा सकते हैं. If you don't have time for that, आप इनमें से कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं. For example, there is an app called Word of the Day. I have installed all of them because they are very effective. If you install Word a Day, this app is going to give you a word on daily basis with its meaning and its use, how to use it in a sentence. Along with the British Council, this is a very good app which is going to be having lots of podcasts. आप podcast को सुन सकते हैं जिससे आपकी listening और speaking skills enhance हो सकती हैं. Then there is an audio book. There are millions of them out there. आप कोई भी audio book install कर सकते हैं. Again, if you have an eyesight issue but you still need to read, this book is going to read it for you. And then we have an Elsa. This is a very effective app. I'm afraid this is a paid one, लेकिन कुछ इसमें versions जो हैं वो unpaid हैं, free हैं. You can use it, and this is going to judge your accent, your fluency, and this can judge you up to level C2. I believe you should know, all be agreeing that there are certain levels of English, A1, A2, B1, B2, C1 and C2. C2 जो है वो नॉन नेटिव्स के लिए है. हम C1 तक भी पहुंच जाएं, that is appropriate, लेकिन ये आपको जज करेगा and this is going to tell you कि either आपकी जो accent है वो appropriate है, either you are closer to beginners or intermediate or upper beginner or upper intermediate. So this app is going to help you out. ठीक है? So we have agreed so far that the teacher has to be innovative and a teacher has to be a good student as well. So if you want to learn and if you want to improve, there are millions of apps downstairs, but I have given you a glimpse of just a few which I personally use and I can swear by it. These are very effective and I believe you should go for them as well. Okay, so there is a triangle on the screen right now. I want one of you to tell me what is the relation between curriculum, assessment, and instruction. Why there is a triangle over here and why these things are interlinked and how? Anyone? Anyone? Mr. Shahid? Professor Sahab? Anyone who is listening out there? Yusuf Toor, could you please tell me how curriculum and assessment and instructions are interlinked? Why there is a triangle in between them? Anyone? Thank you so much. Yes, Mr. Ali. So, instructions are actually must be prepared and given the curriculum, and the assessment shows how effective your instructions or lecture was to the students.
I appreciate your response. Thank you so much. So what I assume, yeah, thank you so much. What I assume from this triangle that all of these things are interrelated. Assessments curriculum does not only give you a resource to teach, but it gives you a resource to assess. Okay? So anyone from the session, could you please tell me the difference between assessment and evaluation? Anyone? Curriculum gives you books to teach, and curriculum, the new curriculum, I believe, is also teaching you how to assess your child according to the new curriculum. It is giving you the ways, it is giving you the SLOs to be acted upon in the class and to be assessed at the end of the session. So I've given you two words. These are action verbs. I just want you to tell me what is the difference between assessment and evaluation. There is a thin line between it. Anyone? Mr. Habibullah, Engineer Sahab, Arsalan Habibullah, I believe, am I right? Anyone, could you please tell me the difference between assessment and evaluation? Yeah? There is a thin line. So, assessment, grammatically or by dictionary, it means to assess for the purpose of improvement. We assess at the end of the session or during the class to enhance more or to teach more, not to judge, not to give grades. But we evaluate for the purpose of judgment. We evaluate at the end of the lesson or the end of the session or the end of the term to judge or to give grades. Either it is A or A plus or whatever. So there is a difference between these two action verbs that we assess for the purpose of improvement. We do not give grades. We give more explanation. We give more effort to the child to improve further. All right? But we evaluate at the end of the term, at the end of the lesson, or the end of the whatever, for the purpose of judgment, and we give grades according to it. Got it? So, curriculum is a whole set of instructions. From the curriculum, we can extract books and we can extract the methodology to assess a child for the purpose of improvement, and it gives us a set of instructions. तो जो मौजूदा करिकुलम है वो सिर्फ आपको बुक्स नहीं दे रहा, वो आपको पढ़ाने का भी तरीका बता रहा है और वो आपको चाइल्ड को असेस करने का भी तरीका बता रहा है, एंड इट इज गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस एज वेल कि पढ़ाना कैसे है. ठीक है? आप करिकुलम से सिर्फ बुक्स नहीं निकाल रहे हैं बल्कि तरीका कार भी निकाल रहे हैं और असेसमेंट भी निकाल रहे हैं. Curriculum is not teaching you to evaluate, but it is teaching you to assessment. So this is a triangle which is interlinked. Anything so far which is confusing? Can you please say it? Irfan is saying to repeat it again. What do you want me to repeat, dear? Mr. Irfan, where are you? Can you please start your video? I can't see you anywhere. Okay. Yes, Irfanullah Sahab. Could you please tell me what to repeat? Assessment and evaluation. Very good. Okay. हम assess करते हैं ताकि हमें पता चले हमारा बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है और हम इसको फर्दर टीच करते हैं. असेस करने के बाद हमें थ्रू द डिक्शनरी या डिक्शनरी के हिसाब से हमें उसको ग्रेड नहीं देने हैं. वी असेस फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है? एंड वी एवेल्युएट फॉर द पर्पस ऑफ जजमेंट. जज एवेल्युएट करने के बाद हम उसको ग्रेड देते हैं. इसीलिए हम जो पेपर्स लेते हैं हम उसका नाम असेसमेंट रखते हैं. वो गलत नाम है, उसका नाम एवेल्युएशन होना चाहिए, क्योंकि हमारा मकसद असेसमेंट के बाद इंप्रूवमेंट है, ग्रेड देना नहीं है. ठीक है? एवेल्युएशन के बाद हमारा मकसद है ग्रेड देना. थैंक यू सो मच. एनीथिंग एल्स or should I proceed further? All right. It is very obvious that English is taught with 4 modules.
if you want to teach English as a language or Urdu as a language, these 4 modules are very, very important. Could you please number them? What is the first module, which is very important? When a child is born, he does what and how he learns the language. So please, I want you to number it. What module should be the first one to cater? 4 modules में से कौन सा ऐसा मॉड्यूल है जिस पे हमें सबसे पहले इम्प्लीमेंटेशन करनी चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश एज अ लैंग्वेज या उर्दू एज अ लैंग्वेज सीख जाए? कैन यू प्लीज नंबर? What is number 1? What is number 2? What is number 3? And what is number 4? Anyone? Listening, that's appropriate. That's very nice. Listening is the first one. हमें listening के through बच्चों को अंग्रेजी सिखानी चाहिए. So what do you say? A teacher has to be bilingual in the class or just to speak English throughout in the session? Yeah? From the day 1? Both? Okay. Okay. Neutral speaking and writing? Okay. I believe listening should come first. What should come second? What do you think should be second if we want to teach English as a language to our students? Reading. That's appropriate. That's very nice. I agree with that. And it's obvious what would be the third one. What would be the third module? Speaking. That's appropriate. Bravo. And obviously fourth is left. So all of these modules are catered well in IELTS as well. When a child or a very sophisticated person comes to you and he wants to do an IELTS, we also teach the IELTS through these modules and judge them with these modules as well. So when a child is born, what he hears his parent or the family around him speaking in some kind of language. So whatever he hears, that goes inside his ears and he become acquainted. उसकी पहली जान पहचान लैंग्वेज से अपने कानों के जरिए होती है जब वो लैंग्वेज को सुनता है. So when the student comes to your class, a teacher has to be, I believe he or she has to use a single language, that is English, because we are here to teach English as a teacher. So a teacher has to be, using only one language. At least if she can't speak or he can't speak fluently, at least start with small sentences. Yeah, do you agree with that? Because when a child is in the class, he hears your teacher. If the teacher is continuously speaking Urdu and teaching Urdu, speaking English and Urdu, he is not going to absorb. So he absorbs through listening and he absorbs through reading. So the first thing we have to cater is the teacher has to speak English in the class because the student is absorbing whatever the teacher is saying. All right. When he is able to understand whatever you are saying, you give a book in his hand. From the book, he starts learning words. And when you gradually go from the lower to the upper classes, he starts learning the sentences. And then the sentences become paragraphs. So then he absorbs from the reading from the book as well. So the first thing that is very effective is the teacher to be fluent in English. So कहानी कहाँ से start होगी? Teacher की education से. The teacher has to speak English in the class because when you speak English in the class, the student is going to absorb that. And then you give the book in his hand and then he starts absorbing the words from the books. And then comes the speaking part. When he absorbs through listening and when he absorbs through reading, now he is able to speak. ज़रूरी नहीं कि वो पहले ही दिन जो है वो fluent हो जाए, उसको time लगेगा. But still, if the teacher is putting his or her effort, there is a day, and the day is going to come very soon, when the child is about to speak simple sentences, and those simple sentences will eventually convert into conversation. And then, if the methodology is right, if the SLOs have been acted upon, student will be able to write something
जूनियर क्लासेस में वो वर्ड लिखने के काबिल हो जाएंगे, फिर वो सेंटेंस लिखने के, और फिर वो पैराग्राफ लिखने के काबिल हो जाएंगे. हाउ मेनी ऑफ यू डू यू एग्री विद दैट? How many of you agree with that? That this is the right way of teaching any language, not in a case of English, but in Urdu. If an Urdu teacher is there in the class, I believe she has to speak Urdu fluently and continuously. Yeah. अगर आप दोनों जुबानें मिलाएंगे तो बच्चा तो फिर दोनों ही सीखेगा ना. अगर आप इंग्लिश ही बोलते रहेंगे तो eventually a day would come that he will start listening and absorbing. How many of you? I just want it to be interactive. Come on, please say something. Mr. Irfan is active and Mr. Ali is active, and I thank you for your participation, but I want you to please incorporate. Yeah, Mr. Wahid, Mr. Faisal, anyone. Ubaid? Hello, if I'm audible, say something. So I believe you all agree, क्योंकि खामोशी नीम रजामंदी होती है, तो I think I should proceed further. The origin of curriculum. How many of you are well aware of the term of the curriculum? Yeah? Otherwise, this is going to be an objective-based learning. I'm going to give you whatever I've prepared for, and you're going to get more at the end of the day. So why don't you just participate, I believe? Yes, thank you, sir, for your thumbs up. It means you're listening. Iraj Fatma, or is it Iraj? Okay, so curriculum is a derived word from a Latin word that is called currere, which means to run. It's not running in all of the direction. It is running in on the right path, which is going to lead you to achieve your goals. Got it? So curriculum is what? The term curriculum has come from the Latin word I just told you, currere, which means to run. And it means to originally by a race or a running track, I'm sorry. In education, it refers to a structured set of learning. What do you mean by structured set of learning? Whatever you are teaching, it has to be structured. Experiences and objectives designed to achieve educational goals. So curriculum is there to give you to achieve educational goals. बहुत ज़्यादा एजुकेशनल गोल्स हो सकते हैं, ठीक है, हर क्लास के सेपरेट हो सकते हैं, तो दैट्स व्हाई दिस इज समथिंग वेरी बिग टू अचीव. तो इट हैज टू बी सॉर्टेड. इसको सॉर्ट आउट करना है क्लास वाइज, ग्रुप्स वाइज, ताकि टीचर को पता चल सके कि इस क्लास में मुझे कितना पढ़ाना है. और करिकुलम आपको सिर्फ यही नहीं बताता कि कितना पढ़ाना है, इट टेल्स यू हाउ मच टू टीच and how to teach as well. They give you a set of instructions as well. And that's why I am here standing in front of you. Okay, curriculums does not give you a book to teach. It gives you SLOs, the methodology as well, and the method to assess your child in the class and evaluate at the end of the session. So curriculum development is influenced by social needs, philosophy, psychology and cultural values. ठीक है, पाकिस्तान का करिकुलम सेपरेट होगा, ऑब्वियसली हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, इंडिया का सेपरेट, दूसरी कंट्रीज का सेपरेट. सो एवरी करिकुलम इज डिजाइंड अकॉर्डिंग टू द रिलीजन एंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स एंड सोशल नीड्स. इसलिए आपने देखा होगा हमारी बुक्स की जो थीम्स हैं और सब थीम्स हैं वो रिलेटेड हैं हमारे रिलीजन के साथ, और ऐसा ही होना चाहिए. करिकुलम हैज टू बी असाइंड विद द नीड्स ऑफ द सोशल डिमांड. ठीक है, पैथ ऑफ द स्टूडेंट बता रहा है और हमारा बता रहा है कि हमारी नेशन को इस वक्त क्या चीज़ की अशद ज़रूरत है. एंड इट डिटरमाइंड हु एक्वायर्स व्हाट टाइप्स ऑफ नॉलेज एट व्हाट स्टेज एंड व्हाट एज. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द करिकुलम. इट गिव्स यू डेफिनेट इंस्ट्रक्शन कि कौन सी स्टेज और कौन सी एज पे आपका बच्चा कितना एब्जॉर्ब कर सकता है. And according to the curriculum, it is designed and we have to act upon the SLOs, which is already designed keeping these things in their mind. चलिए जी, अब तो हमें curriculum के बारे में पता चल गया. It teaches us how much to teach, how to teach and how to examine. Later we have discussed between the difference between assessment and evaluation. I just want you to repeat it, Mr. Irfan. I believe you are the only one vocal.
and wide awake. Yes, tell me the difference between examine, assessment, and evaluation. Yeah? Mr. Royal School. Yeah. Amir Gulzar. जी प्लीज आई वॉन्ट यू टू बी इंटरैक्टिव मुझे बताइए एग्जामिन असेसमेंट और इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या है विच आर द सिनोनिम ऑफ अदर इनमें से दो ऐसे वर्ड्स हैं विच हैव द सेम मीनिंग्स एंड सेम पर्पस वन इज डिफरेंट कैन यू प्लीज टेक द रॉन्ग वन आउट yeah Mr. Rubaid Ahmed, you have started your video. It means you're about to say something. I would appreciate if you say something. If I'm audible. Okay, I'm going to tell you, we assess for the purpose of improvement. हम assess करने के बाद हमें grade नहीं देने हैं, हमें evaluate करने के बाद grade देने हैं. We evaluate for the purpose of judgment. Don't call it judgment, that is not appropriate. But after evaluation, we are able or we want to give grades. Same as goes with evaluation. They are the synonyms of each other. We examine for the purpose of judgment or we give grade at the end of the examine or evaluation. ठीक है? So, we are going to be understanding a lot of action verbs while during this exercise because this is interlinked with each other. So, whatever action verb you find it vague or ambiguous, you are free to ask me. Yes, thank you so much, Mr. Irfan. I appreciate your input. Okay. You know, there are two sets of instructions or medium of teaching in our country right now going on. One is the objective-based learning and the other is the SLO-based learning. In the objective-based learning, the teacher goes to the class and starts teaching. ठीक है? And उससे students के mind को provoke नहीं मिल रहा. वो सिर्फ सुन रहा है and he is bored. ठीक है? उसका माइंड एक्टिव ही नहीं है और एट द एंड आप उसको क्रैमर बना रहे हैं कि जो कुछ आपने सुना या नहीं भी सुना, जो कुछ बुक में है, रीड इट एंड राइट इट अगेन. और फिर एंड में आपने जो कुछ बुक में लिखा है या कॉपी में लिखा, हम उस पर आपको आपकी क्रैमिंग की वजह से जज करेंगे. ये सिस्टम चल रहा है हमारा मैट्रिकुलेशन में या FA में. ठीक है? जबकि ओ लेवल्स और ए लेवल साइड पे हम बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग सिखा रहे हैं, हम बच्चे को प्रोवोक कर रहे हैं, स्टिमुलेट कर रहे हैं, इग्नाइट कर रहे हैं कि वो सोचे और सोच के लिखे, वो समझे, उसका जहन खुले और वो क्लास में बोर भी ना हो. ठीक है? पुराना जो स्टीरियोटाइप ओल्ड स्कूल सिस्टम है उसमें स्टूडेंट्स आर नॉट लर्निंग एनीथिंग और जब वो बाहर जाते हैं दे फाइंड द एजुकेशन सिस्टम वेरी डिफिकल्ट बिकॉज व्हाट वी आर doing in our country, we are not teaching our child according to the new era, according to the challenges of the new era. हम उसको सिर्फ क्रैमिंग सिखा रहे हैं, हम सिर्फ अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, हम सिर्फ टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं. उस टेक्स्ट के थ्रू जो स्किल्स हम उसको सिखा सकते थे हम वो नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ चैप्टर्स कंप्लीट करना है और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो ज़्यादा मार्क्स लेना है, which is not appropriate. इसलिए आपने देखा होगा मैट्रिक में जिन बच्चों के मार्क्स आते हैं वो तो बहुत ज़्यादा हैं. On the other hand, it is not happening in the schools which are following SLOs क्योंकि वहां पर बच्चों को मार्क्स लेने के लिए तैयार नहीं किया जा रहा, वहां बच्चों को स्किल्स सिखाए जा रहे हैं. यहाँ पे डैफोडिल की समरी याद हो गई, दैट्स फाइन, एक दो तीन समरी कर लें, that is fine. But on the other hand, they are teaching their child to write the summary whatever comes to them. तो यानी कि unseen paper तो हम solve करना बच्चे को सिखा ही नहीं रहे, हमने अपने बच्चों को सिर्फ क्रैमिंग सिखाई और बच्चा बेहतरीन मार्क्स लेके तैयार हो गया और जब प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो he is not able to write an application, which is a dilemma. So what we want to do, we want to equate a child who goes to the matric and a child who goes to the O-level set of system. तो हम चाहते हैं कि अगर O level का बच्चा खुद से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखे तो मैट्रिक का बच्चा भी खुद से लिख पाए. अगर O level का बच्चा जो है वो समरी लिख सकता है तो मैट्रिक का बच्चा भी खुद से लिख पाए. उसको सिर्फ 3-4 समरियां ना याद करनी पड़े, वो इस काबिल हो, इतने सेट ऑफ स्किल्स उसके पास हो कि वो खुद लिख ले. थैंक यू.
Royal School, I believe. Okay, let it be. ठीक है, तो दिस इज आवर स्ट्रगल इज कि मेट्रिकुलेशन के जो निज़ाम तालीम है वो ओ लेवल्स के बराबर आ जाए, मेट्रिकुलेशन वाला बच्चा भी एसएलओ के मुताबिक स्टडी सीखे, उसके स्किल्स डेवलप हों, एंड इट गोज विद इंटरमीडिएट एंड ए लेवल, ठीक है, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग इनहांस हो, ही इज एबल टू लर्न एंड एग्जीक्यूट एंड थिंक एंड evaluate और कम अप विद द इनोवेटिव आइडियाज, सिर्फ क्रैमिंग ना आए, रटा ना आए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, वो अपनी तरफ से उस कॉन्सेप्ट के बारे में लिख सकें, ये ना हो कि पेपर करीब है और वो बस बुक्स को एब्जॉर्ब कर रहा है क्योंकि मैंने उसको लिख कर आना है, ऐसे ना हो, बस कि उसका कॉन्सेप्ट्स इतने क्लियर हो, वो अपने विजन को इतना क्लियरली पेन डाउन कर सके कि पेपर से पहले उसको फिक्र ही ना हो, उसको वो बस ये कहे कि माय कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, आई एम एबल टू राइट, सो दिस इज आवर मोटिव इज, yeah. And that is why we want to say adieu to this old school system in education, and we want to bring a revelation, and we are working on it. और ये कोई हवाई बातें नहीं हैं, we are doing it for the past 10 years, and we have numerous, I mean thousands of schools in our panel जो इस बात को समझ चुके हैं कि cramming एक scam है, हमें उससे अपने बच्चों को निकालना है. We should follow the new SNC, which is based on the SLO, and the child is able to build up his skills and do whatever he want. Yeah. So we are going to mainly focus on the SLO based examination system. हम इसकी थोड़ी तह में जाएंगे और फिर बाद में हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करना इन द क्लासरूम हम ये भी सीखेंगे इंशाल्लाह आज. तो whatever the motive we had, our mind has resulted in one curriculum, one nation motto of the Cantab. This is the Cantab who brought this motto, this slogan out there, that there should be one nation, one curriculum. कि अगर A level या Beacon House या किसी भी स्कूल का बच्चा, if he or she is able to write a descriptive writing or any skills of English, मेट्रिकुलेशन का बच्चा भी उसी लेवल पर आ जाए by following the same SLO. सारे स्कूल्स अगर SLO पे एक्ट अपॉन करेंगे तो हमारे हमारे बच्चे जो हैं वो न्यू एरा के काबिल हो जाएंगे. So what we are doing in our publications, that is, we are breaking the norms of the teaching in English and teaching the old stereotype methodology. We are about to learn some new methodology in the wake of the SLO to make our child ready to face the challenges of the 21st century. I think I have said a lot. Now it's your turn to please input. What do you say? That SLO is going to do that or not? Or are you already working on such system? जी Mr. Royal School, could you please tell me आप कहाँ से बात कर रहे हैं? क्योंकि आपका कैमरा ऑन है. जी प्लीज अनम्यूट कर लें अपने आप को. थैंक यू डियर. अनम्यूट कीजिए. We have already unmuted you. Yes, you're working on it, Irfanullah Sahab. Thank you so much. Yes, sir. Mr. Royal School. I can't get that. Could you please say that again? Oh, that's very nice. That's very nice. So, are you affiliated? Are you already working on the SLO-based system? Yes. That's very good to know. Thank you so much, sir. Thank you for your input. Mr. Amil Gulzar, you have started your video. I believe you have something to say. Yes. Thank you so much. So, okay. So what Cantab is doing right now, Cantab is not publishing books for the sake of money. Cantab is publishing profound ideas. What we have in our mind is to make our new generation ready to meet the challenges. और वो उसी केस में होगा अगर आप SLO based learning कराएंगे, अपने बच्चों को skills सिखाएंगे, scamming से और grammering से बाहर निकाल देंगे. ठीक है, हमारा मकसद यही है. अब इंग्लिश के साथ क्या प्रॉब्लम है? इंग्लिश के साथ ये प्रॉब्लम है कि we don't have any simulation. We have nothing in our hand except a book. तो उस बुक को हमने अब कैसे इंटरैक्टिव और एक्टिव बनाना है कि हमारे टीचर्स जो हैं उसको पढ़ाने में भी मुश्किल ना हो और बच्चों को समझने भी मुश्किल ना हो और बच्चे बोर भी ना हो.
ठीक है, तो we have given you QR codes on every page जिनको टीचर स्कैन करके आप वीडियोस को देख सकते हैं बिफोर गोइंग टू द क्लास। जो वीडियोस जो हैं वो इंटरेक्टिव हैं एंड दे आर ऑन SLO, दे हैव फुल ऑफ मेथडोलॉजी। और मज़े की बात है, ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ एवरी वीडियो देयर आर रिसोर्सेज एंड दोज रिसोर्सेज आर PPT if you are able to show it to your students. And within those resources, we have made worksheets at the end, which are downloadable and editable. अगर आप उनको download करके edit करना चाहते हैं according to your needs and your requirements, you are able to do that. And the best thing is they are free. And the other thing is there are skill sheets and all of the necessary material or resources which is needed by the teacher to come up with the effective lesson, and even it has lesson plans at the end. ठीक है, और वो lesson plans जो हैं वो students के जो हैं क्या कहते हैं उसको, attention span के हिसाब से बनाया गया है। क्या मुझे बताएं कि grade 11 और 12 के student का attention span क्या है? If the class is so 45 minutes, what is the attention span of a child? Anyone? Please talk to me. Umme Muqaddas, come on. Can you please tell me what is the attention span of an 11th grader? Anyone? 45 minutes की क्लास में वो कितना सुनेगा आपको? About 20 minutes. Yeah, of course, 15 to 20 minutes, ठीक है। और जो 1 to 2 grader है वो सिर्फ 7 to 8 minutes का उसका attention span है, और वो पर ईयर पर मिनट बढ़ता है, और 11 तक पहुंचते पहुंचते वो 15 मिनट तक रह जाता है। इट मीन्स 45 मिनट्स की क्लास में उसने आपकी बात सिर्फ 10 मिनट के लिए सुननी है, और आप 45 मिनट्स के लिए बोलेंगे तो इट मीन्स 30 मिनट्स तो उसने आपको सुनना ही नहीं है। तो वाई डोंट यू डिवाइड योर लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू द अटेंशन स्पैन ऑफ द चाइल्ड? ठीक है, सो मेक इट प्रोएक्टिव, जाते साथ उसको बताना ना शुरू कर दें कि आज हमने ये पढ़ना है। डू आस्क देम, ठीक है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मेक देम सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4, ठीक है, और उसमें एक आपका स्टूडेंट हो काइनेस्थेटिक, एक विजुअल हो, एक ऑडिटरी हो, ठीक है। Let them sit in the groups, because if they are going to sit alone, they are going to get bored and they are not going to learn only by listening to you. तो make it a peer work, उसको ग्रुप्स में बिठाएं। सबसे पहले अपनी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज करें ताकि उसका अटेंशन जो है वो अपने ग्रुप्स में डाइवर्ट हो। हर ग्रुप में एक लीडर हो, उस लीडर को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये देनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डू यू नो अबाउट जिक्सा रीडिंग? एनीवन? Anyone having any idea about the Jigsaw reading? Are you people incorporating it in your daily lessons plans or not? Otherwise, I'm gonna give you a very detailed insight of the Jigsaw reading, because your child is not going to listen to you more than 10 minutes. So you have to arrange your class in such a way that a child is active and he is listening to you enthusiastically instead of getting bored. Yeah, Mr. Irfan has said that he is working on Jigsaw reading. That's good to know. But still, we are going to have a detailed insight of the Jigsaw reading, and I'm going to tell you later in the session. So what we are doing in the Cantab is we are not publishing books only. We are publishing profound ideas, and we are generating new minds, and those minds are capable of critical thinking, not only cramming. Okay, do you know there is a specific terminology for grade 9 student? आपको पता है कि grade 9 के student को एक खास नाम से पुकारा जाता है, grade 10 को भी? Anyone? अगर नहीं तो I would tell you that there is a specific terminology by which we call grade 9 student and grade 10 student, ठीक है, internationally. तो एक छोटा सा quick fire मैंने रखा था, but you people are, I believe there's an internet issues at your side, that's why. Otherwise, I believe you're very enthusiastic.
We have some technical issues, so please bear with us. जी नाज, do you have any idea grade 9th के बच्चे को internationally क्या कहते हैं? 10 के स्टूडेंट को क्या कहते हैं? 11 को? चले एक हिंट दे देती हूँ। 11 के स्टूडेंट को हम जूनियर कहते हैं इंटरनेशनली, और 12 के स्टूडेंट को वी कॉल सीनियर, बट देयर इज अ very specific and interesting terminology, a name which we call a 9th grader internationally. Yeah? No idea? Freshman. Okay. फलाहुद्दीन फ्रॉम पिशावर। पिशावर से आप कौन से इलाके से हैं सर? कौन से स्कूल से हैं जरा बताइएगा। हयाताबाद। गुड, गुड टू नो। We have some technical issues, so please bear with us. Yeah, जाइए। We have some technical issues. चलिए meanwhile हम आपस में बातें कर लेते हैं। इरज, which city you are from? Mr. Ali is from Gujranwala. Falahuddin is from Peshawar, Hayatabad. Ah, okay, you are from Gilgit-Baltistan. That's very nice. How is internet over there? Umme Muqaddas, could you please like to tell me? And Irfan Saab, which city are you from? Sawad, that's good to know. That's good to know. That's very nice. Okay, ji. Chale ji, there is a quick fire in which I've asked you several questions. So, who was right? Yes, 9th grader is known as a freshman, 10th grader is known as sophomore, and 11th grader को हम junior कहते हैं, और 12th grader को, yes, उम्मे फैसलाबाद. Anji, that's good to know. I was फैसलाबाद the other day. And 12th grader को हम senior कहते हैं, ठीक है? तो who said freshman? A huge round of applause for you, sir. You were right, absolutely right. So now we have officially come to the SNC 2020, in which we are going to talk about the syllabus, the curriculum of grade 9 and 12. ठीक है? नौशहरा PK, आपने नाम नहीं लिखा डियर। नौशहरा KPK आपने नाम नहीं लिखा, आप नौशहरा से हैं, वेलकम। Thank you so much for telling. It's good to know. Okay. So according to the curriculum 2020, ठीक है, subject of English language has 4 competencies. यहाँ पर उन्होंने 1, 2, 3 लिखा है, लेकिन जब हम आगे जाके इन competencies को पढ़ेंगे तो उसके हम अल्फाबेट यूज करेंगे, उसका नाम नहीं लेंगे, बिकॉज हमारे पास आगे जगह नहीं होगी। तो फर्स्ट इज द ओरल कम्युनिकेशन स्किल, आगे जाके हम इसको ए से डिनोट करेंगे। देन इज द रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, वी विल बी राइटिंग इट एज बी। vocabulary and grammar, we will be writing as C, and same goes for the reading, we will using D. So there are 4 competencies in English language, regardless of the session from 9 to 12. 4 competencies हैं 1 से लेके 12 तक, लेकिन इनके स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क्स डिफरेंट हैं। हम आज जिन क्लासेस को केटर करेंगे those are 11 and 12, लेकिन ये पीछे से चली आ रही हैं, ये 9 से चली आ रही हैं, लेकिन कॉम्पिटेंसीज 1 से 12 एक जैसी हैं। ठीक है, तो इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे, जिसमें से एक डिवीजन इसकी बेंचमार्क है। ठीक है, तो आगे जाके व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑरल कम्युनिकेशन, तो हम ऑरल कम्युनिकेशन की पूरी फ्रेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे ए। ठीक है, आगे हम रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग पूरी फ्रेज नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे बी। हम vocabulary and grammar नहीं लिखेंगे, we are going to write C, and we are not going to write writing, we are going to write it as D. Zoom कर दें जी। इरफान, I want you to zoom it.
Okay, Shafiq Ahmed, you are from Nashera KPK. I believe lots of you are from the Peshawar and KPK side. I welcome you. It's good to know. Okay. चलें जी. These are the competencies. और इन competencies को हम further divide करेंगे अपनी understanding के लिए और बच्चों की understanding के लिए भी. ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ा कि oral and communication skills को हम जाहिर करेंगे A से, लेकिन oral and communication को हम further divide करते हैं मजीद 4 sub competencies में. इसकी number 1 competency है listening and viewing. Another sub competency is A2, listening and speaking readiness. Another sub competency of A is listening and speaking for different purposes and audience. Yet another, last but not the least, the another sub competencies of the A1 is this listening and speaking of different audience. तो एक competencies को हम 4 से 5 sub competencies में divide करते हैं. फिर उनकी further division होती है SLOs में. यहां पर तो आपको सिर्फ 2 SLOs हैं, लेकिन हो सकता है इस competencies के total 8 हों. यहां पर इसके सिर्फ आपको 2 SLOs visible हैं, लेकिन हो सकता है इसके total 10 हों. यहां पर आपको सिर्फ 2 SLOs visible हैं, पर probably इसके 12 हों. यहां पर आपको एक नजर आ रहा है, हो सकता है इसके total 6 हों. ठीक है, तो एक competency divide होती है further 4 से 5 सब competencies में, और वो मजीद divide होती है SLO में. ठीक है, this is the code for the publisher, for the teacher, for the author. इस code को हम break करना सीखेंगे. Anyone, what does SLO stands for? SLO का क्या मतलब है? Yeah? Anyone? Active? SLO stands for? Yes, Mr. Ali? I have high hopes from you, son. Students' learning outcomes? Yeah, you're yes, that's fine. Yes, students' learning outcome. Thank you so much. And E stands for what? E stands for what? Iguana? E stands for what? Yeah? I'm not going to proceed further if you're not going to answer me. Come on, wake up. Expected. No, E stands for English. We are talking about English. This is English curriculum. ठीक है? So, SLO stands for Students Learning Outcome. E stands for English. And this 11 means 11 grade. Okay? And this A1 means this sub-competency. And this is SLO number 1. Got it? Let's discuss this one. SLO stands for Students Learning Outcome. E stands for English. 11th is the grade. And A3 is the sub-competency of this competency, this one. तीसरी sub-competency है A की. And this is SLO number 1. I want one of you to please unmute. It doesn't matter, Mr. Ali. Don't be sorry for that. Yeah, I just want anyone from you to please unmute and please decode this one for me. So I would have a better understanding that you people have learned it. Please, Mr. Ali, unmute yourself and please just decode with me. Or anyone. Amir Gulzar, you have started your video. It means you are in a mood to talk. Come on. Yes, sir. Unmute. Hello. Come on. I just want one of you to please be active. Yes, Kaisar Abbas sahab. Please start your video. Ma'am, could you please zoom it in? Yes, please so that we can zoom see? it. Yeah, please zoom it. This one. Can you see it now? Yes. Okay. Students learning outcome. Appropriate. English grade 11. Yeah. A4. And A4. A4, this is row number 1. A4 is what? It's competence. This is the sub-competency of the first one. Thank you so much. Okay. Okay. Thank you so much. It means
Everything is clear to you. Now we can proceed further. Is it? Shall I proceed further? I believe it's a yes. Okay. Okay जी. We have read कि oral communication में को हम A कहते हैं. Oral communication further divided है A1 में, A2 में, A3 में, A4 में. और आगे से मजीद उनकी ब्रांचेस हैं. God knows better. किसी में 7 हैं, किसी में 8 हैं, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं. ठीक है. लेकिन ये ऊपर से कैसे आ रही हैं? ऊपर से कम्युनिकेशन जो हमारी जो ओरल कॉम्पिटेंसी है वो डिवाइडेड है स्टैंडर्ड में. ये एक मयार है जो हम चाहते हैं कि हमारी 9वीं जमात का बच्चा 12वीं जमात तक उसमें ये खूबियां मौजूद हों. ठीक है. कौन सी खूबियां मौजूद हों? हम चाहते हैं ग्रेड 9 का बच्चा ये सब कुछ कर पाए, ग्रेड 12 तक ये काम वो कर पाए जो यहां पर लिखे हुए हैं. ठीक है. लेकिन दिस इज अ ह्यूज टास्क. तो इस टास्क को हमने डिवाइड किया है बेंचमार्क्स में. 9 और 10 का एक बेंचमार्क है, 11 और 12 का एक बेंचमार्क है. बट टुडे सेशन इज रिगार्डिंग टू द ग्रेड 11 and grade 12. So let's see what is the benchmark which is required. Can you please zoom it? You can zoom it as much as you can. इसमें पिक्सल नहीं फटेंगे इंशाल्लाह. चलें जी. हम चाहते हैं हमारी 11वीं जमात का बच्चा और 12वीं जमात का, जिसको हम जूनियर और सीनियर कहते हैं, इस काबिल हो जाए. किस काबिल हो जाए? Respond to a variety of spoken disclosure at increasing level of difficulty in different context. Okay, apply a range of listening strategies individually and collaboratively to comprehend and interpret by critically analyzing information. Everything is clear. अब मुझे जल्दी से बता दें इसमें कितने action verbs हैं. How many action verbs are there in this small paragraph? Because curriculum is interlinked with the action verbs. Curriculum को समझने के लिए action verbs को समझना जरूरी है. Once you know the action verbs, you can execute the curriculum. Yeah? चलें. Can we do it together? Can I write now? Yeah, please unmute. No. How many action verbs are there in this small paragraph? Respond, apply, interpret, analyze. So whatever text it is written, उसको हमारा बच्चा रिस्पॉन्ड भी कर पाए, रिस्पॉन्ड भी करे, अप्लाई भी करे, इंटरप्रेट समझे भी और एनालाइज भी कर पाए. ये हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग के स्किल्स हैं. And our child at this age is capable of doing that. ठीक है. जो कुछ नॉलेज हम उसको 11वीं 12वीं जमात में दें, उसको वो रिस्पॉन्ड करे, उसको अप्लाई भी करे. ठीक है. अगर उसको पोइम बनाना सिखाई है आपने या पढ़ाई है, तो अपनी पोइम कल को बना के ले आए. दिस इज नॉट अ ड्रीम. हमने उसको इस काबिल बनाना है कि अगर हमने उसको एक छोटी सी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करवाई है तो वो खुद भी लिखने के काबिल हो, रट्टा ना लगाए, सिर्फ इसको इंटरप्रेट भी करे, जो कुछ हमने उसको पढ़ाया उसको समझ में भी आए, एंड उसको एनालाइज भी करे टेक्स्ट को क्रिटिकली. क्योंकि एट दिस एज आवर चाइल्ड इज केपेबल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग. आगे जाके ब्लूम्स टेक्सोनॉमी को हम थोड़ा सा टच करेंगे विद योर कॉर्पोरेशन, और फिर हम इस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है. ओके. What are benchmarks specifically? In curriculum, benchmarks are specific measurable standards. जनाब, ये कोई हवाई चीज नहीं है. जो benchmarks हैं उनको हम अचीव कर सकते हैं क्योंकि वो measurable हैं, उनका एक खास स्टैंडर्ड है, हम वहां तक पहुंच सकते हैं. Or expectations that defined what students should know and be able to do at a particular point on their learning journey. अपनी learning journey के दरमियान उन्होंने जो कुछ सीखना है उसको वो apply करना भी सीखें. This is a benchmark and we are specifically catering 11 to 12. Different segments हैं यहाँ पर. 1 to 2 के separate benchmarks होंगे, 3 5 के separate होंगे, 6 8 के separate होंगे, 9 10. But specifically in this session we are discussing
discussing the benchmarks of grade 11 or 12. जो कुछ वो पढ़ाएं वो उस पर रिस्पॉन्ड भी करे, उसको अप्लाई भी करे, उस नॉलेज को, उसको एनालाइज भी करे और उसको समझ भी आए. ठीक है, अब हम इस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आगे जाके वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्दर. Till now, any ambiguity, if you are precarious, you are free to ask me any questions. मैम Yeah, वालेकुम अस्सलाम. मैम एक क्वेश्चन है कि आपको पता है चूंकि हमारे बच्चों की एक्सपेरिमेंट इतनी अच्छी नहीं, बच्चे हमारे रट्टा लगा के आगे आए हैं. Yeah. अभी एक बच्चे को अगर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पता ही नहीं है तो हम उसको कैसे ये कैपेबिलिटी उसके अंदर हम एनहांस जनाब इसीलिए तो कोई ऐसा मेथड है? Yes. प्लीज. Yes, we have such methods जिसमें मैं अभी आपको इंशाल्लाह टाइम मिला आज, नहीं तो फिर किसी और सेशन में. I have specific strategies in which I'm going to tell you how to teach descriptive, argumentative, informative writing कैसे करवानी है. ठीक है, उसकी पूरी बेसिक्स तो है नहीं ताकि हम बेसिक्स बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए. आपके पास जैसा भी बच्चा आएगा एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक फॉर्मेट में आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपने एग्जीक्यूट कैसे करनी है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को क्लास में एट दिस लेवल. ठीक है, इंशाल्लाह मैंने इस पे डिटेल जो है वो काम किया हुआ है, और अगर मुझे टाइम ना भी मिला तो मैं आपको स्पेसिफिकली अलहदा से समझा दूंगी, लेकिन पूरी कोशिश करूंगी कि आई एम गोइंग टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम. ठीक है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इन पे से गुजर रही हूँ ताकि फिलॉसफी पे ज्यादा टाइम ना लगे. हम लाइफ स्किल्स को और लैंग्वेज स्किल्स को एनहांस करें टू टेल द टीचर हाउ टू टीच द स्किल्स टू द स्टूडेंट. हमारा बेसिक मोटो यही है आज का. ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, आप मुझे पढ़ दीजिए प्लीज. कैसर अब्बास साहब पढ़ दीजिए इसको. They are simpler and precise, achievable, easier to teach and evaluate. ये स्टूडेंट लर्निंग आउटकम हमारे कैसे होने चाहिए उसके मुताबिक लिखा. ये स्टूडेंट आउटकम की डेफिनेशन है, और इसमें सबसे खूबसूरत बात क्या लगी आपको कि ये इजियर है, ये अचीवेबल है. बस हम इनको अचीव कर सकते हैं, और ये आसान है पढ़ाने एज कंपेयर टू द बेंचमार्क. बेंचमार्क की रेंज बहुत ज्यादा है, ये थोड़े थोड़े से हैं और आसान हैं और हम पढ़ा सकते हैं. सबसे खूबसूरत बात इनकी यही है. ठीक है, लिसनिंग एंड व्यूइंग को देख लेते हैं. ऐसा ग्रिड बना हुआ आता है, इसको प्रोग्रेशन ग्रिड कहते हैं. ये मैंने चंक उठाया है हमारे SNC 2020 से, जिसमें इस तरह का ग्रिड, प्रोग्रेशन ग्रिड बना होता है, जिसमें चाहते हैं कि ग्रेड 9 के स्टूडेंट को ये आना चाहिए, 10 के स्टूडेंट को ये आना चाहिए, 11 के स्टूडेंट को ये आना चाहिए, 12 के स्टूडेंट को ये आना चाहिए. और आपने बहुत खूबसूरत बात की, आना चाहिए, पर सिखाएगा कौन और कैसे सिखाना है? तो डोंट यू वरी, वी आर हियर जस्ट टू टेल यू कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है. अगर ये चीजें करिकुलम में लिखी हैं तो ये हवाई बातें नहीं है, दे आर अचीवेबल एंड वी कैन डू इट इन द क्लास. हाउ टू डू इट आई एम हियर टू टेल यू. ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं कि आपका बच्चा इस कॉम्पिटेंसी के हिसाब से. अच्छा, व्हाट इज द मोस्ट डिप्राइव्ड कॉम्पिटेंसी? कौन सी ऐसी कॉम्पिटेंसी है जिसपे स्कूल्स में काम नहीं हो रहा, ना ही हम पढ़ाते हैं दिल से, ना ही वो जज होता है. और जब वो बच्चे जब डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बन जाते हैं और मेरे पास जब आते हैं और मुझे इनको OET या IELTS करवाना होता है, दे आर नॉट एबल टू स्पीक अ सिंगल सेंटेंस बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर स्पीकिंग इन द क्लास, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर लिसनिंग इन द क्लास. तो मेरी मुश्किल हल कीजिए, बच्चों को अभी से ही आप जो है वो लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स उनके एनहांस कीजिए. यू नो, ओरल कम्युनिकेशंस डज नॉट ओनली स्पीकिंग, इट इज लिसनिंग एज वेल. क्योंकि जब बच्चों को आप डिफरेंट एक्सेंट सिखाते हैं उनको समझ ही नहीं आता कि क्या बात हो रही है. ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड कॉम्पिटेंसी है जिस पे अभी काम नहीं हो रहा है. कुछ स्कूल्स में हो रहा है आटे में नमक के बराबर, बट वी वांट टू बी एग्जीक्यूटेड, टू बी एड्रेस्ड ऑन अ mass. Yes, because we are teaching English as a subject, not as a language. Very good, sir. Very good. हम इंग्लिश सिर्फ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं कि 5 चैप्टर्स हमें हर हाल में फर्स्ट टर्म से पहले कंप्लीट करने हैं. हम सिर्फ चैप्टर्स के पीछे भाग रहे हैं, हम सिलेबस के पीछे भाग रहे हैं. हम अपने बच्चों को बोलना, सुनना, लिखना नहीं सिखा रहे हैं, समझना नहीं सिखा रहे हैं. That's why when they are at this level, then when they are doing IELTS or PTE or OET, they are facing a lot of problems in understanding. तो हमें शुरू से ही बेस बनानी है. कैसे बनानी है वो इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट. ठीक है,
11 का बच्चा क्या कर सके? Establish roles and apply dramatic approaches with confidence, especially in a 4 or 5 act play. 4 से 5 बच्चे मिलके कोई एक्ट प्ले करें और एक्ट करने के काबिल हों, ठीक है? और 12वीं का बच्चा क्या करे? ठीक है, अप्लाई ड्रामेटिक अप्रोचेस विद कॉन्फिडेंस स्पेशली इन ड्रामा. ड्रामे में जब वो ड्रामे में पार्टिसिपेट करे तो वो अप्लाई कर सके, यानी कि उसकी स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स इतनी एनहांस हो जाएं कि वो ड्रामा एक्ट करके अंग्रेजी में आपको दिखा दे स्टेज के ऊपर. आर वी टीचिंग आवर स्टूडेंट्स ड्रामेटिकल स्किल्स और नॉट? यस और नो? आई बिलीव नो, बिकॉज दिस इज द मोस्ट डिप्राइव्ड कॉम्पिटेंसी. हम इसको एड्रेस ही नहीं कर रहे हैं. तो मैं आज आपको एक ऐसा तरीक़ेकार भी इंशाल्लाह पूरा बताने की कोशिश करूंगी कि हाउ टू एड्रेस these competencies and inculcate not if not on daily basis, at least weekly in the class. So why? Because our child should be able to act, ठीक है, in English, respond to the text of different purposes including arguments and discussions. Arguments में 2 जुमले हमारे बच्चे बोलते हैं, फिर उनकी अंग्रेजी खत्म हो जाती है शुरू होने से पहले ही. तो हम चाहते हैं इतनी अंग्रेजी उनको आ जाए कि वो arguments में conversation तक पहुंच जाएं. Listen to the text and critically analyze the situation and events. और critically इस पे बात कर सकें. अगर कोई बात उनको पसंद है तो वो बड़मला उसका इजहार कर सकें कि this is good and this is bad. Why it is bad? ठीक है, इतनी अंग्रेजी उनके पास हो तो hopefully we are going to address how to teach your child to speak in single sentence, how to converse, and eventually how to critically give his or her opinion in English language. Yeah? तो आपके ख्याल में पोइट्री को कितने दिन देने चाहिए? आप किस तरह पढ़ाते हैं? अगर आप टेक्स्ट पढ़ा रहे हैं तो आप कितने दिन में अपना टेक्स्ट खत्म करते हैं? और कौन सा पार्ट ऑफ टेक्स्ट आपका ज्यादा टाइम लेता है? जी बताइए मुझे. इफ यू आर टीचिंग अ टेक्स्ट, एक स्टोरी पढ़ा रहे हैं, तो कितना टाइम लगेगा आपको टेक्स्ट पढ़ाने में और कितना टाइम आप एक्सरसाइज को देते हैं? जी कहाँ गए पेशावर वाले? फलाहुद्दीन पेशावर, हयाताबाद से. कम ऑन. ये कौन है? बख्त बहादुर? या आई बिलीव इट इज बख्त बहादुर. जी साहब, प्लीज टेल मी. ये अस्सलाम वालेकुम जी, प्लीज स्टार्ट. अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक आप मुझसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे. जी प्लीज बताइए, आपको पढ़ाने में सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पे लगता है? टेक्स्ट पे या एक्सरसाइज पे? We have 26 silent participants. Yeah? Exercise पे? That's thank you so much. Very good. ये गुड साइन है कि आपने टेक्स्ट पे अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, आप एक्सरसाइज पे कर रहे हैं. दैट इज वेरी नाइस. तो आप टेक्स्ट पे कितने दिन लगाते हैं? इसके नोट्स बने होते हैं ऑलरेडी. टीचर बड़े बड़े नोट्स हम दे देते हैं बच्चों को और बच्चों को हम कहते हैं इसको रख लो. कितना जुल्म है ये, कितना जुल्म है. एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स. अच्छा, फलाहुद्दीन कह रहे हैं पेशावर से, डियर आप एक्सरसाइज पे टाइम लगाते हैं. अच्छी बात है कि आप एक्सरसाइज पे लगाते हैं, लेकिन रटाने में लगाते हैं. दिस इज वेरी बैड. मुझे बताएं टेक्स्ट को कितने दिन लगते हैं? फलाहुद्दीन कैमरा स्टार्ट कीजिए डियर, टॉक टू मी. शाबाश. रॉयल स्कूल ने मुझे पूरा शहर दिखा दिया. जी बताइए फलाहुद्दीन, स्टार्ट योर वीडियो, कम ऑन. मुझे बताएं टेक्स्ट पे कितना टाइम लगता है आपका? 26 participants, only few of you are talking. Why? Come on. Yes, Bakht Sahab. Falahuddin is here. Hi dear, how are you? Can you please tell me what is the name of your school? I'm good. What is the name of your school? I'm Amy from Peshawar. That's very nice. मुझे बताएं एक टेक्स्ट को पढ़ाने में कितना टाइम लगता है आपका? Ma'am, it depends on the length of the text. What if अगर मैं आपको एक ऐसा तरीकाकार आज बता दूं कि एक ही सेशन में, एक ही क्लास में आपका टेक्स्ट खत्म हो जाए और बाकी के जो 5 घंटे हैं वो आप कॉम्पिटेंसीज पे लगाएं, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा.
वेरी गुड, यही सुनना था आपसे। आपके पास अगर टेक्स्ट है तो उस पर सिर्फ 6 घंटे हैं आपके पास, ऐसे ही है। और अगर पोइट्री है तो 4 घंटों से ज़्यादा उसको टाइम ना दीजिए। सबसे पहले अपनी क्लास की अरेंजमेंट चेंज करें, ठीक है। बाकी सेशंस में जैसे मर्जी बैठें, वी डोंट केयर, लेकिन इंग्लिश में इनको ग्रुप्स में बैठाएं, क्योंकि इंग्लिश दे फाइंड इट डिफिकल्ट एंड दे फाइंड इट बोरिंग, क्योंकि उसमें इतना इंटरेक्टिव कोई सिमुलेशन नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनी एज। ठीक है, क्लास में जाइए, मेक देम सिट इन अ ग्रुप ऑफ 4, ठीक है। उसमें आपको पता होगा कि ये उछलने कूदने वाला है, उसको हम काइनेस्थेटिक कहेंगे। ये बच्चा सुन के समझ लेता है, उसको हम ऑडिटरी कहेंगे। इसको तस्वीर दिखाएंगे, ये ज़्यादा खुश होगा, इसको विजुअल कहेंगे। और एक और साथ में इसको बिठा दें। 4 के ग्रुप में बच्चों को बिठाइए, एक ज़हीन ज़रूर बिठाइए उस ग्रुप में, ठीक है। आप जाइए और अपनी क्लास को अगर तो पहले पेजेस देखें कितने हैं, फिर उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। हर ग्रुप को 1 पैरा या 2 पैरा दे दें, ठीक है। और बोर्ड पे लिख दें ग्रुप नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 1। फिर दूसरे ग्रुप को कहें ग्रुप नंबर 2 पैराग्राफ नंबर ब्ला ब्ला 3 ग्रुप पैराग्राफ नंबर 3, ठीक है। इसी तरह सारी क्लास को ग्रुप्स में डिवाइड करके पूरे अपने टेक्स्ट को उनमें डिवाइड कर दें। दिस इज कॉल्ड जिक्सा रीडिंग। डिवाइड करने के बाद हर ग्रुप में एक एक डिक्शनरी पकड़ा दें। डिक्शनरीज बच्चे कभी भी नहीं लेके आएंगे, कभी भी नहीं होगा कि उनके बैग्स में से डिक्शनरीज निकलें। तो इट्स बेटर कि यू शुड हैव अ पाइल ऑफ डिक्शनरी ऑन योर टेबल। हर ग्रुप में एक एक डिक्शनरी पकड़ा दें और ड्यूटीज असाइन कर दें कि आप पढ़ेंगे, आपको जो वर्ड मुश्किल लगेगा आप उसको अंडरलाइन करेंगे, आप जो है वो डिक्शनरी में से इसका मीनिंग ढूंढेंगे और आप जो है एंड में इसकी प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। उनको स्किमिंग सिखा दें उसी वक्त। स्किमिंग मीन्स to give you what you read in the paragraph excluding the details। इसको हम skimming कहते हैं। skimming का भी बता दें कि आप, और जब जो सबसे शाय है उसको कहें you are the presenter, वो पढ़ेगा, वो अंडरलाइन करके मीनिंग्स ढूंढेगा और आप आके क्लास में आके प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और यू टाइम अलॉट कर दें कि यू हैव 10 मिनट्स। 10 मिनट एक पैराग्राफ को पढ़ने में, उसके अल्फाज के मायने निकालने में, दे आर इनफ। दिस इज कॉल्ड जिक्सा रीडिंग, बट एवरीथिंग शुड या तो हमने जो मानी निकालना है वो इंग्लिश टू इंग्लिश निकालना है या इंग्लिश टू दोनों। शुरू में बच्चों को दोनों अल्फाज, दोनों जुबानें सिखाएं। मैं इवन आयर्स लेवल पे भी अपने बच्चों को, बच्चे ही मैं कहूंगी, दोनों जुबानें सिखाने पे जोर देती हूँ, ठीक है। इंग्लिश टू इंग्लिश भी, जिसको हम सिनोनिम्स कहेंगे, और उर्दू में भी, और इसकी सेपरेट लिस्ट बना लें। उनसे कहें कि एक पेज पे सेपरेट लिस्ट बनाएं, जो वर्ड आपने नया सीखा है उसका इंग्लिश में मायने लिखें, जिसको हम सिनोनिम्स कहते हैं, एंड राइट द उर्दू मीनिंग ऑफ इट एज वेल। हार्डली 15 मिनट लगेंगे हर, एट द एंड ऑफ द 15 मिनट्स हर ग्रुप का जो प्रेजेंटेशन रेडी होगी। 1 बाय 1 उनको बुलाते जाएं। जो आपने सेट यहाँ पे बनाया हुआ, مثلا ग्रुप 1 ने अच्छी प्रेजेंटेशन दी, A ग्रेड, ग्रुप 2 ने उससे भी अच्छी दी, A+, ग्रुप 3 ने अच्छी दी, B। उसी वक्त उनको ग्रेडिंग कर दें। ग्रेडिंग में दे विल लव टू डू इट, दे लव द ग्रेडिंग। और फिर कंपटीशन आता है उनमें कि हमें लास्ट टाइम ग्रेड A मिला था, आज वी आर गोइंग टू अचीव ग्रेड 2। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट। मुझे एक ब्लैंक स्क्रीन दीजिए, मैं आपके साथ ये पूरा मैथडोलॉजी स्क्रीन कर लेती हूँ। तो इस मेथड के थ्रू, जिसको हम जिक्सा रीडिंग कहते हैं, वी कैन फिनिश आवर टेक्स्ट इन 15 मिनट्स में वो कर लेंगे, और बाकी 1-1, 2-2 मिनट की प्रेजेंटेशन का टाइम रखें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव 4 ग्रुप्स इन द क्लास। हम कहेंगे ग्रुप 1, पेज 1 है आपके पास बच्चों, एंड यू हैव 2 पैरा, द फर्स्ट 2 पैरा, ठीक है। ग्रुप 2, dear, you have page 2 and you have another 2 para. Same goes for the group 3. Group 3, same story. Group 4, same story. अब जो बच्चा प्रेजेंटर है उसका नाम पहले यहाँ पे लिख लें। Ali, you're going to present from this one. Danish, you're going to present from this one. These are the symbolic name, made up name. You can write whatever. Share, you are the presenter, and Akram, you are the presenter, ठीक है। आप वो जैसे ही आए अपनी प्रेजेंटेशन दें, साथ में उनको ग्रेड्स देते जाएं, ठीक है। और साथ में उनसे कहें whatever the new word you have learned, write it over here। अगर आपने 3 न्यू वर्ड्स यहाँ से सीखे हैं तो उसको वोकैबुलरी की हेडिंग के नीचे उसी से लिखवा लें, ठीक है। अब क्या होगा, बच्चे जब बोर्ड पे सारे वर्ड्स लिख लेंगे
तो पूरी क्लास से कहें कि आपने एक वोकैबुलरी बुक तैयार करनी है, उसमें ये सारे वर्ड्स के मीनिंग लिखे हैं, शाबाश। तो आपने क्या किया, आपने क्लास में टेक्स्ट को डिवाइड भी कर दिया, बच्चों ने प्रेजेंट किया, स्किमिंग भी सीख ली, एंड they have written the meanings of the difficult words they have learned in the group, और फिर सारी क्लास से कहें कि ये सब के सब अपनी बुक पे भी उतार लें आप, ठीक है। दिस इज कॉल्ड जिक्सा रीडिंग। तो कितनी देर में टेक्स्ट कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह? एक लेसन में। क्योंकि अगर आपने क्लास में स्टार्ट में बच्चों से कहा कम रीड, तो बाकी तो पीछे सब सो जाएंगे, ठीक है। आपने ड्राइविंग सीट से हट जाना है, लेट द चाइल्ड ड्राइव द क्लास। आपने पढ़ाने का सारा काम बच्चों पे सौंप दिया, आपने कोई मीनिंग नहीं ढूंढे लेक्चर से पहले कि मुझे क्लास में जाना है और मुझे ये, ऑब्वियसली क्लास 11 में वी हैव सेट ऑफ वर्ड्स व्हिच आर देयर इन द बुक, बट वी आर नॉट टेलिंग देम, वी आर आस्किंग द चाइल्ड टू कम ऑन गो एंड सर्च द डिक्शनरी। उन्होंने डिक्शनरी एक्सप्लोर करना भी सीख ली एंड उन्होंने प्रेजेंट भी कर लिया। So within a lesson we have completed the reading part, and this is how you can do it. Any ambiguity so far, please discuss. Yeah, any ambiguity in this methodology so far, and believe me, this is achievable. When I was a teacher a long time ago, I used to follow this. Yes, please. Any ambiguity so far? If you are precarious, please ask me, I'm here. Or should I clear? That's very good. Falahuddin from Peshawar, Hayatabad. Yeah. And Amjad Uzair, biology. You're a biology teacher. That's good to know. Yeah. अच्छा, मैं आपको पहले ही बता दूं, बच्चे डिक्शनरी कभी भी नहीं लाएंगे, तो आप अपनी क्लासरूम में अपने पास उनसे ही मंगवा के रख लें, नाम लिख लें बच्चों का, ठीक है। अदरवाइज अक्सर यही प्रॉब्लम होगी, हमारे पास डिक्शनरी नहीं है, ये होगी प्रॉब्लम, आई एम टेलिंग यू। सो यू शुड हैव अ पाइल ऑफ डिक्शनरीज, उनसे पहले ही मंगवा लें और उनके नाम लिख के टेबल पे रख लें। और whenever there is an English class, let them sit in the group and let them explore whatever is there. अच्छा, बच्चे पढ़ाने से ज्यादा सीखते हैं, बजाय इसके कि आप बोली जा रहे हैं और बच्चे they are not listening because they are getting bored. तो why don't you let them do all of the work and you just roam? बस आप roam कीजिए क्लास में, देखिए कि are they exploring the right thing or they are doing something else. That's it. आपने पैसिव हो जाना है, let the child be active. Otherwise वो एक्टिव हो जाएंगे और आपको पैसिव होना पड़ेगा। Everything is clear? Should I proceed further? Any ambiguity in your mind so far? Oh, thank you, Mr. Irfan, so much. Thank you. Okay, let's move forward. Thank you, Sara. Sara, मुझे बताइए कहाँ से आप? Yes, this is possible to follow one SLO in one period regarding to the English. ठीक है, हम आगे देखेंगे ना। अभी देखें, हमने पूरे एक SLO को हमने किस तरह ट्रीट किया। हमने स्किमिंग भी सिखा दी, वोकैबुलरी बिल्डिंग भी हो गई, टेक्स्ट भी कंप्लीट हो गया, बच्चे ने प्रेजेंटेशन भी कर ली और आपकी सर खपाई भी नहीं हुई, ठीक है। अगर आप मेरा साथ दें तो मेरी भी सर खपाई ना हो, बोर्ड आप पढ़ लें। ओके, चलें जी। I need my next slide. From Sharakpur. Okay. Muhammad Ishtiyaq साहब कह रहे हैं from Sharakpur. Never heard of that area. Okay. अच्छा जी, कहाँ चला गया? ये जरूरी था, नहीं वही रहने दे। मेरा ख्याल है अब हम उस नहज पे पहुंच गए हैं जहां पे हमें करिकुलम भी क्लियर है, हमें कॉम्पिटेंसीज भी क्लियर हैं। और मैं आपको बता दूं कि कॉम्पिटेंसीज हुकूमत ने कैसे पब्लिश की हैं, पब्लिशर्स कैसे पब्लिश करते हैं, लेकिन कैंटअप एक जीनियस आइडिया लेकर आया है। उस जीनियस आइडिया के थ्रू हम कैसे इंग्लिश को जो है वो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिसर्च, ठीक है। गवर्नमेंट ने पब्लिश की है कॉम्पिटेंसीज ऐसे, यानी कि पहले वो कहता है इसने ए लिखी, फिर इसने बी लिखी, फिर सी लिखी, फिर डी लिखी। दिस इज द इंस्ट्रक्शन और दिस इज व्हाट इट इज रिटन इन द SNC ऑफ 2020, ठीक है।
बुक्स जो छपती हैं वो कैसे छपती हैं? They write the B competency first, then they want you to do the C competency, then they want you to do the A competency, then they want you to do the D competency. This is not the right way of doing it. What Cantab has come up with the brilliant idea in English only or in Urdu probably, that do the C competency first. Just tell me, what is C competency? Hello, what is C competency? Anyone awake? Reading, listening, speaking, reading, No, writing. no. What is C? What is C particularly? What is C? कैसे रबाज साहब? What is C? Vocabulary and grammar. Absolutely fine. Walk and grammar. What is B, by the way? Reading and critical thinking. Bravo. You are absolutely right. What is A? Oral communication skills. Perfect. Perfect. And what is D? Writing skill. Shabash. And what is the deprived competency which we least take care about of is? Which we are... Listening and thinking, oral communication. Yes. ओरल कम्युनिकेशन को तो हमने सिरे से निकाल ही दिया है, ना हम इसको पढ़ाते हैं, ना ही हम इसको जज करते हैं, ना ही मार्क्स देते हैं, ना ही हमारे फाइनल में इनके मार्क्स को इंक्लूड किया जाता है. बट देयर आर सर्टेन स्कूल्स आउट देयर हु आर फोकसिंग ऑन लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, एंड जिन्होंने अपने पेपर में एक पार्ट रखा हुआ है कि पेपर से पहले लिसनिंग एंड स्किल का टेस्ट होगा और उसके मार्क्स फाइनल में लगते हैं. बोर्ड में नहीं लगते अभी तक. बोर्ड वालों को ये बात सुननी चाहिए कि हम इस कॉम्पिटेंसी पे काम नहीं कर रहे हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. डू यू थिंक इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? इज इट? 110%. Yes. अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? If I am... Without communication. Absolutely right. If I was a good writer, I would not be standing over here. मुझे चूंकि बोलना आता है इसलिए I'm your trainer. अगर आपको बोलना नहीं आएगा, you can't be a teacher. तो this is or anything else. Communication skills अगर अच्छे नहीं है तो आप कहीं भी जाके, बेशक आपके पास PhD की डिग्री, who would believe you? No one. If you're not going to speak it out. तो आपकी जुबान ही आपकी पहचान है, आपका अंदाज़े बयान आपकी पहचान है, आपकी तालीम का, आपकी शाइस्तगी का वहीं से पता चलता है कि you are groomed, you are well learned, you have knowledge how to speak, और दिल में उतरने का फन आता है आपको. तो ये चीज़ें हमें क्लासरूम लेवल पे बच्चों को सिखानी चाहिए कि अपने आप को कैसे एक्सप्रेस करना है. उनको वर्ड्स दें, उनको इनकरेज करें और उनको मोटिवेट करें और उनको सामने ऐसा बन के दिखाएं. डू यू एग्री? फलाहुद्दीन फ्रॉम हयाताबाद पेशावर, डू यू एग्री? Yes, English is a language, it is not a subject. So, Cantab has come with the brilliant idea to teach English according to this flow chart. पहले C कराइए, इसके बाद B कराइए, फिर A कराइए और फिर D पे जाइए, and there is a science behind it and I'm going to prove it. ठीक है, ये हवाई बातें नहीं है, ये एक ऐसा प्लान है जिस पे काम हो रहा है. This is achievable. And this is desirable because this is acting like wonders. Yes? एक क्वेश्चन है मैम. Yes? Yeah? मैम इसको A, B, C, D को सही ऑर्डर में मतलब नहीं रखा, या हम इसको अपनी मर्जी से, जैसा अब ओरल कम्युनिकेशन स्किल हम उसको पहले करवा रहे हैं, अगर हमने C, B, A, D ये ऑर्डर क्यों रखे? ये इसके पीछे एक पूरी साइंस है और मैं उसके बारे में बात करूंगी. ठीक है, अब हम जाते हैं उधर जो हमारे से स्लाइड मिस नहीं हुई. ये मैंने आपसे कहा कि पहले हम ये करेंगे. इसका क्या नाम है? A, B या C? क्या कहूं इसको? इसको मैं क्या कहूं? इसको मुझे यस, शाबाश, C है. और ये क्या है? What is this? This is D, मैडम. शाबाश. और यहां पर हमें A करानी है and this is D. Why C first? आपका यही क्वेश्चन है ना, क्यों C, क्यों पहले?
because it builds the foundation by building vocabulary and making learners familiar with the text. अगर आप ग्रामर का पोर्शन पहले कराएंगे तो ग्रामर पढ़ाना एक तो आसान भी है और उससे वो अल्फाज से उसकी शनासाई हो जाएगी जो अल्फाज उसने आगे जाके पढ़ने हैं, क्योंकि वर्ड्स पहले समझाए जाते हैं, फिर सेंटेंस समझाया जाता है, फिर पैराग्राफ तक बात पहुंचती है. डू यू एग्री? Do you Yes, agree? ma'am. Yes. So Yes, sir. by teaching the vocabulary first, we are teaching the part of a sentence. Thank you, Mr. Ali. Thank you for the thumbs up. ठीक है, तो vocabulary और grammar portion करवाने से पहले हमने उसको words सिखा दिया. ठीक है, words कैसे सिखाना है, कैसे execute करना है, इस सारे सिस्टम को हम आगे डिस्कस करेंगे. रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग करने के बाद बच्चा क्वेश्चन आंसर करेगा. क्वेश्चन आंसर्स का मतलब है सेंटेंस बनाएगा. सेंटेंस तभी बनाएगा ना जब उसको वर्ड आएगा, तो वर्ड तो हमने पहले ही सिखा दिया. राइटिंग में वो अपनी कोई कॉम्पोजिशन लिखेगा, पैराग्राफ लिखेगा. पैराग्राफ उसी सूरत में लिखेगा ना जब उसको सेंटेंस बनाना आएगा, तो वो आपने पैराग्राफ बनाने से पहले इसको सेंटेंस बनाना सिखा दिया है. दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग यू थ्रू द कैंटअप के टीच सी, then B, then A, then D. क्योंकि इससे वो एक लफ्ज सीखा, इससे उसने एक लाइन सीखी, इसके उसको बोलना आ गया और इससे पैराग्राफ बनाना आ गया. मैं आपको ग्रामर पढ़ाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह. क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं वो भी इस पे बात करेंगे, और पैराग्राफ राइटिंग कैसे करवाई जाती है इस लेवल पे हम उस पे भी बात करेंगे प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन से. ठीक है. And teaching vocabulary first is the indirect way of teaching. Why? Instead of teaching the text directly, use grammar part first to make the learner familiar with the text. Use interactive activities to make him indulged in the text. Introduce scanning method to search and the particular keywords. वो कैसे हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम अभी समझते हैं. Can't we gain vocabulary through oral communication? Yes, of course we can. And this is the part of a teacher. This is the role of a teacher. As soon as she has stepped into the class, she has to start speaking English because the child absorbs from the ears. Before opening the book, you are the book. You are talkative book. So what a teacher has to do is to start speaking English as soon as she step in the class, so the child can absorb and start absorbing the words through the ears. ठीक है? So everything is a vertical link. Everything is linked from the junior level. Thank you, Falahuddin. You have been so proactive and I appreciate that. Thank you so much. Thank you, Mr. Irfan. Yes, nobody is illiterate. This is just a matter of exposure and knowing the right methodology. अगर methodology आती है तो कोई भी illiterate नहीं रहेगा. ठीक है? Rome was not built in a day. This is the gradual process. तो आपके हाथ में अगर 11वीं की किताब है तो आप ये ना समझें कि आपके पास 11वीं का बच्चा बैठा है. आपके पास एक ऐसा बच्चा है जो कि 1 से यहां तक पहुंचा है. आपने उसको पुराना नॉलेज भी देना है और 12वीं के लिए तैयार करना है. आपने इंटरलिंक करना है. ठीक है? आपको पता होना चाहिए कि वो 10 से क्या सीख के आया, 9वीं से क्या सीख के आया, 8वीं से क्या सीख कर आया. और अगर मेरे पास वो बैठा है ब्लैंक, तो उसको मैंने ब्लैंक नहीं रहने देना. मैंने उसको प्रीवियस नॉलेज भी देना है. ठीक है? मुझे पता होना चाहिए कि प्रीवियस क्लासेस में इसको क्या आना चाहिए था और इसको क्या नहीं आता. यूजुअली नहीं आता होगा, तो डोंट यू लूज योर हार्ट. ठीक है? और आई हैव टू मेक हिम रेडी फॉर द 12th class as well. Okay, so what this slide means, it means link the SLO with the previous classes and bring them to the current one and predict the next one. आप देख सकते हैं कि हर sentence में there are a lot of action verbs, so we cannot execute without having the knowledge of the action verb. तो my dear, what we have to do is, आपने सिर्फ 11वीं का नॉलेज दे के बाहर नहीं निकलना है. आपने थोड़ी प्रीवियस नॉलेज भी उसको दे दें फर्स्ट लेक्चर में. ठीक है?
जिस तरह मैं आपको शुरू से लेकर आई करिकुलम से उठाकर आपको कॉम्पिटेंसीज बताई, कॉम्पिटेंसीज के बाद मैंने आपको बताया कि बुक्स हुकूमत हमें कैसे कहती है करने को, बुक्स कैसे छपती हैं, और कैंटअप क्या चाहता है, कैंटअप के पास क्या मेथोडोलॉजी है। तो आई हैव टोल्ड यू कि सी पहले पढ़ाओ, क्योंकि सी से वर्ड बिल्डिंग होती है, ठीक है। और प्रीवियस नॉलेज देकर अपनी लेवल तक आके आगे की प्रिडिक्शन कर दो कि दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू रीड इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। इस तरह बच्चा जो है वो अगर पुरानी बात भूल भी गया है तो क्लास में आके उसको रिवाइव हो जाएगा। तो हर लेक्चर में जाके ऐसा कीजिए, सिर्फ अभी की बात ना कीजिए, पुरानी बात भी कीजिए और फ्यूचर की भी कर लीजिए, ठीक है। और रिलेट योर लेसन विद द रियल लाइफ एग्जाम्पल। बच्चे ये समझते हैं कि नॉलेज सिर्फ बुक में, और बुक इज क्वाइट बोरिंग, इट्स ऑल टेक्स्ट। नो, रिलेट इट विद रियल लाइफ थिंग्स, ठीक है। मसलन इफ यू हैव read a poetry, any poem in the class, तो उससे कहिए go search a relevant poem written by this same poet, ठीक है। फिर उसकी समरी लिख के लाइए, जरूरी नहीं कि जो टेक्स्ट में उसने पढ़ा है। एंड एनी फिगरेटिव स्पीच यू हैव इंट्रोड्यूस्ड, तो उससे कहें कि फाइंड इट फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम द नेट और फ्रॉम एनी अदर पोम, नॉट फ्रॉम द बुक। तो लेट हिम एक्सप्लोर आउटसाइड द टेक्स्ट बुक, अदरवाइज वो समझेगा बुक में ही सारा नॉलेज है, बाहर कुछ भी नहीं है। Tell them book is going to drive you towards the right path, and the whole world is full of knowledge out there. Go and explore, or give me other examples of figurative speeches which you find in the world around you. Got it? क्या लिखा है इरफानुल हक साहब ने? Recapitulation, yeah. जनाब ये किताबें हैं 11वीं और 12वीं जमात की। दिस इज व्हाट वी हैव पब्लिश्ड इन फॉर द ग्रेड 11 एंड ग्रेड 12 स्टूडेंट का। मुझे फटाफट बताएं कि ग्रेड 11 के स्टूडेंट को इंटरनेशनली क्या कहते हैं? एनीवन? एनीवन? आमिर गुलजार साहब, आपने एक लफ्ज भी नहीं बोला, दिस इज सो बैड। हमाद, नाज, चलें जी। ए लेवल स्टूडेंट्स, नहीं, internationally we call 11th grader junior and 12th grader, can you please say that? Anyone? Yes, Umme Muqaddas? Hamad, come on, wake up. It's okay, no need to be sorry. Senior, thank you so much. So a 12th grader is known as a senior, so he's a senior now, and he is capable of high order level thinking, ठीक है। दिस इज अ कॉम्पिटेंसी, प्लीज जूम इट। एक दफा टेस्ट हो जाए आपकी जहानत का और अटेंटिवनेस का। आई वॉन्ट यू टू अनकोड दिस, दिस इज अ कोड। कौन करेगा इसको? डीकोड कीजिए। एनीवन? चलो फलाहुद्दीन, शाबाश, स्टार्ट योर वीडियो। चलें जी, यस फलाहुद्दीन, स्टार्ट योर वीडियो, डिकोड कीजिए किसी भी एक ऐसे लोग को। Students learning outcome, English, grade 10, chapter 1, topic number 2. चैप्टर 1 नहीं माय डियर, यहां पे गलती हो गई। क्या चीज है ये? C1 क्या है? Competency. Which competency? Sub competency. किसकी? English, grade 10. माय डियर, यू आर एब्सोल्युटली राइट, लेकिन यहां पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है खान साहब। नॉलेज कॉम्पिटेंसी, ये किसने लिखा है? जनाब, दिस इज सी कॉम्पिटेंसी, एंड सी इज व्हाट? जल्दी बताइए, सी इज व्हाट? आमिर गुलजार, जल्दी बता दें, शाबाश। सी इज, oh my god, come on, vocabulary and grammar. Thank you, Professor Saab, you saved the day, thank you so much. C is vocabulary and grammar. You saved the day, sir. So there are 4 competencies. I will repeat it. A is oral, B is reading, C is vocabulary and grammar, and D is writing. So this is sub competency of C. C is further divided into C1, C2, C3, and C4. Am I clear so far? Give me a thumbs up if I'm clear. If you are clear.
Give me a thumbs up. Thank you so much. Thank you, Falahuddin. Okay, who is this? Mathematics. Do you teach mathematics? Are you sure? And you're attending an English lecture. Wow, I hope this is informative, isn't it? Can we talk? 083219. This is your name. Okay. So, what they want you under these competency that comprehend and use contemporary idioms and proverbs in the different texts in their speech. What is meant by contemporary? New or old? इंग्लिश वालों को कंटेम्परेरी का मीनिंग नहीं आता होगा तो किसको आएगा? Am I right? Contemporary? Yeah? Contemporary means new, somewhat new. And what is the difference between idiom and a proverb? Come on. Speak it up. Yeah? Hum asar. Ah, very good. Are you an English teacher, Mr. Falahuddin, Hayatabad, Peshawar? Yeah? Anyone, what is the difference between idiom and a proverb? You're not an English teacher. Wow. Acha, those who are English teacher, can you give me a thumbs up so I would know that I'm talking with English personals? Yeah? Please zoom it. I just want you to tell me the difference between idiom and a proverb. You are a marketing executive. Oh my God. Okay, and you're taking English session. Okay, that's fine. Yeah, there is no restriction, anyone can come. Okay, what is the difference between idiom and a proverb? And how to execute it in the class? If you have such question at the back end of the book, how you will do that to make it interactive? Yeah? A silence? So idiom is a phrase which does not literally means what it says. For example, cherry on top. I'm under the weather. Yeah? Idiom is a hidden meaning. You can say that in a sense, but idiom does not literally means what it says. It means something else. Yeah? And proverb is, a proverb has a lesson and it is a complete one and it literally means what it says. So whenever you have such questions at the back end of your book, you can ask your child to go back in the jigsaw reading. जब भी आप jigsaw reading करा रहे हो तो आप बच्चों को पहले idiom और proverb को समझा के उसके एग्जाम्पल बता के उससे कहे गो ये आपका पैराग्राफ है, आपने ना सिर्फ इसको रीड करके स्किम करके लाना है बल्कि जितने idioms और phrases आपको मिले उनको भी साइड पे लिख लें. ठीक है? इस तरह वो स्किमिंग का मेथड भी सीख लेगा और स्कैनिंग का भी सीख लेगा और idioms और proverbs भी उसको मिल जाएंगे. और जब वो बोर्ड पर आपका प्रेजेंटर आए अपने सेट ऑफ वोकैबुलरी के साथ तो उससे कहें कि आपने जो अगर idiom और proverb आपके नजर से गुजरा है उसको भी साइड पे लिख दीजिए. ठीक है? तो आप देख सकते हैं आइडेंटिफाई and use adjectival, prepositional, adverbial phrases. ठीक है? तो आपका बच्चा जो है जब भी जिक्सा रीडिंग में अपना पैराग्राफ का टास्क करे उसको पहले ग्रामर सिखा दें ताकि वो स्किमिंग करते करते स्कैनिंग भी कर ले. मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्किमिंग एंड स्कैनिंग बाय द वे? Yeah? Anyone? Mr. Marketing Executive? Anyone? Skimming and scanning? Who is English teacher, by the way? Anyone? Who is English teacher? उर्दू मैथ्स तो नजर आ रहे हैं. एक मुझे इंग्लिश नजर आ रहे हैं यूसुफ तूर साहब और सर प्रोफेसर साहब है डॉक्टर अली एंड इरफानुल्लाह. व्हाट डू यू टीच सर? हाय इरफानुल्लाह साहब, व्हाट डू यू टीच? केमिस्ट्री. That's amazing. Okay, that's very nice. Okay. तो distinguish आप देख सकते हैं कि I am circling action verbs. What is scamming? Is cheating? No, my dear. I'm not talking about scamming. I'm talking about scanning. SCANNING. Scanning का मतलब है आप उसको एक की वर्ड दे दो कि जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे
तो आप उसको जाके स्कैन करके ढूंढ के लाओ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक पैरा है, तो आप बच्चे से कहें कि आपने जो है वो एक एडवर्बियल फ्रेज को स्कैन कर लें, उसको ढूंढें फटाफट। मसलन टेक केयर, टेक केयर को ढूंढ के लाएं, कहाँ लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो वो टेक केयर पे उसकी तवज्जो होगी, वो देखेगा फटाफट टेक केयर किधर है, टेक केयर किधर है। वो सारा कुछ नहीं पढ़ेगा, वो अपने पर्टिकुलर वर्ड को देखेगा। दिस इज कॉल्ड स्कैनिंग, व्हेन यू रीड पर्पसफुली जस्ट टू स्कैन दैट पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। तो रीडिंग कैन बी डन thoroughly. Reading can be done for the purpose of scanning and for the purpose of skimming. Skimming में हम unnecessary details निकाल देते हैं और उसको कहते हैं कि skim करके लाओ उस पैराग्राफ का जो माखज है, जो मेन पॉइंट है, उसको लेकर आइए और क्लास के सामने प्रेजेंट कर दें। यही आपकी जिक्सा रीडिंग का मकसद होना चाहिए। जब आप जिक्सा रीडिंग करवाएं, अपने बच्चों से कहें कि skim the paragraph, just tell me in what line what is the most important thing in the paragraph, ठीक है। क्योंकि बच्चे जब जिक्सा रीडिंग में आके पूरा पूरा पैराग्राफ रट्टा लगा के शुरू कर देंगे तो मकसद फौत हो जाएगा, टाइम वेस्ट होगा, क्योंकि हमारा मकसद है हमें पता चल जाए कि इस पैराग्राफ में क्या बात हुई है। तो स्कैनिंग किस लिए होती है? स्कैनिंग होती है एक पर्टिकुलर वर्ड को रूल आउट करने के लिए, जस्ट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड। जिसमें अगर आपने इडियम्स का कॉन्सेप्ट दिया, to ask your child to scan the para, that particular para which you have assigned him, just to scan it for the purpose of an idiom, if it is there. Got it? Have you got it so far? Let me know. Or I'm going to proceed further. Okay जी, मैंने आपसे कहा कि आपने जाते साथ बुक्स नहीं खोलनी, ठीक है। आपने बच्चों को ग्रुप्स में बिठा दिया, डिवाइड करके बिठा दिया, हर ग्रुप में एक ज़हीन बच्चा बिठा दिया। ज़हीन में से सारे हैं, ठीक है। उनका तरीक़ेकार सीखने का मुख्तलिफ है। कुछ बच्चे खेल के सीखते हैं, कुछ सुन के सीखेंगे, कुछ देख के सीखेंगे सब, लेकिन हम एक ही डंडे से सबको हाँक रहे हैं। हमें नहीं पता कि इसकी डिमांड कुछ और है। सबका IQ लेवल सेम है, हमारी मैथडोलॉजी ठीक नहीं है पढ़ाने की, इसीलिए हम एक ग्रुप में हर तरह के स्टाइल को बिठा देंगे। हम काइनेस्थेटिक, ऑडिटरी, विजुअली हर तरह के चाइल्ड को एक ग्रुप में बिठा दिया। आपने बुक खुलवा दी, आपने उनको ग्रामर साथ में डिक्शनरी दे दी। मैंने आपसे कहा स्टार्ट विद द ग्रामर पोर्शन। सपोज दिस इज द ग्रामर पोर्शन ऑफ अ 11th ग्रेड बुक। अब आपके पास इतने ज्यादा ग्रामर के क्वेश्चंस हैं, आप किस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे? ये क्वेश्चन है इस एक्टिविटी का, ठीक है। दिस इज द ग्रामर पोर्शन। हम हमेशा सी कॉम्पिटेंसीज को ब्लू से लिखते हैं, ठीक है। जब भी ये स्टार्ट होती है तो ब्लू से लिखते हैं। इसके नीचे एक हमने बात की करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स की, फिर हमने सारे प्रोनाउंस की बात कर दी, मिसप्लेस्ड मॉडिफायर की बात कर दी, फिर हमने इसकी एक्टिविटी करा दी, ठीक है। हमने फॉल्टी ऑफ कंपैरिजन की बात की, कॉमा स्लाइस की बात की, और ब्ला ब्ला ब्ला, साथ में जो स्पेस थी उसकी भी हमने एक्टिविटी की बात कर ली, ठीक है। अब मुझे बताएं, यू हैव सो मेनी ग्रामर क्वेश्चंस ओवर हियर। आप बताएं, आप क्लास में जाकर किस क्वेश्चन को पहले देंगे? इसको करें, नीचे ले। दिस इज द पार्ट ऑफ सी कॉम्पिटेंसी। इन दोनों में से आप कौन सा पहले देंगे टारगेट अपनी क्लास को? कौन सा क्वेश्चन? मैंने आपसे कहा बच्चों को ग्रामर कराना है। बी और सी में से? यस, बी और सी में से कौन सा देंगे आप? मैडम सबसे पहले आइडेंटिफाई द सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड स्प्लिट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। ओके, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी क्लास में जाते साथ? आपने जाते साथ बच्चों को ग्रुप में बिठा दिया, ग्रुप में बिठा के आपने उनको नहीं बताना हमने आज क्या पढ़ना है, आपने सिर्फ पेज नंबर खोला और उनसे कहा कि पहले उनको समझानी है जो भी पार्ट ग्रामर का कराना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप करवा रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब, डायरेक्ट, ऑब्जेक्ट, थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेशन उनको जरूर देनी है, बिल्कुल ब्लाइंड नहीं छोड़ देना, ठीक है। इंफॉर्मेशन दे दी, अब बताएं पहले कौन सा देंगे उनको करने के लिए, बी या सी? I think B was right the sentence. Write 10 sentences that include a subject, verb, indirect, object. अच्छा, इस मैथडोलॉजी को करने के लिए कौन सा मेथड उनको बताएंगे? क्या इसको करने के लिए स्कैनिंग चाहिए या स्किमिंग चाहिए? बताइए।
मैम अगर सॉरी मेरे को सोल्यूशन अगर वर्ड में करता हूँ कि अगर हम फोर कॉम्पिटेंसीज को लेते हैं स्पीकिंग वगैरह, तो अगर बेसिक स्केलिंग वाली जो प्रोसेस है अगर हम उसको ले लें कि पहले हम जो है एक चीज को लिखें बोर्ड पे या बोल दें और पसंद करें कि आप इसको भी कॉपी करें लिखें और फिर इस तरह की प्रोसेस को कंप्लीट करें। ठीक है सर, वेरी गुड। फलाहुद्दीन साहब जो कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने कितना शानदार जवाब दिया। उन्होंने कहा स्कैनिंग, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। और सना ने भी कहा स्कैनिंग, ऑफ कोर्स हम बच्चों को पहले नो हाउ देंगे, इन चीजों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे ब्रीफली, फिर हम टेक्स्ट को डिवाइड कर देंगे ग्रुप्स में और फिर बच्चों से कहेंगे कि जाओ स्कैन करो और 10 सेंटेंसेस ऐसे लेकर आओ जिनमें ये क्वालिटीज, ये पार्ट्स ऑफ स्पीचेस मौजूद हों। इस तरीके से हम क्या करेंगे, एक तो ग्रामर की समझ आ गई उन्हें, उस पार्ट ऑफ स्पीच की समझ आ गई, आपने स्कैनिंग के लिए भेज दिया। एक और फायदा हुआ इसका, उसका वो क्या हुआ, एक और फायदा हुआ हमें इसका, इनडायरेक्ट वे ऑफ टीचिंग की मैंने स्टार्ट में बात की थी। व्हाट इज दैट? सबसे इंपॉर्टेंट फायदा ये हुआ कि उन्होंने टेक्स्ट खुद पढ़ लिया। वो पीछे गए, आपने टेक्स्ट, आपने बात भी नहीं की टेक्स्ट की, बट दे आर फोर्स्ड टू रीड द टेक्स्ट जस्ट टू फाइंड दीज इन द टेक्स्ट। तो ये इनडायरेक्ट वे ऑफ रीडिंग हो गया। हमने 4 काम किए। हमने उनसे कहा, पहले तो उनको हमने सब्जेक्ट बताया, वर्ब, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट्स, ये सारी चीजें बताकर हमने इनसे कहा गो, दिस इज योर टारगेटेड टेक्स्ट, इस टेक्स्ट में से ना सिर्फ ये चीजें निकाल लो बल्कि सेंटेंसेस भी ढूंढो। अब वो बेचारे करने कुछ और गए, टेक्स्ट उनको पढ़ना पड़ गया। तो दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट वे ऑफ टीचिंग। हमने ग्रामर कराते कराते उनको मजबूर कर दिया कि वो टेक्स्ट को खुद ही पढ़ लें। उन्होंने टेक्स्ट पढ़ लिया, उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल गया अपने टेक्स्ट का। नाउ टेक्स्ट से वो कुछ हद तक फेमिलियर हो गए while searching for these specific parts of speeches. So this is called indirect way of teaching, indirect way of getting them the first hand knowledge of the text. क्योंकि बच्चे 11वीं में आ गए हैं, अब इस काबिल हैं कि वो पढ़ सकें। They are not active learners now, they are passive learners now. They have grown up and they are fully capable of high order level thinking. How many of you are clear so far? Because I believe we are going to have a break in 6 minutes. Is it? Yeah. So anything ambiguous so far, ask me. And we are going to have 20 minutes break from 11 to 11:20 or 30. 11:30. So it means I'm going to have a cup of tea. So would you. So please, anything ambiguous so far? Do you like this indirect way of teaching? Do you think this is achievable? Do you think this is active? The child is active now? Yes, thank you, Mr. Kaiser. And you are passive. You're just giving brief knowledge. थोड़ा सा नॉलेज दिया और आपने उनको छोड़ दिया, जाओ टेक्स्ट को पढ़ो, ढूंढो, सर्च करो, स्किम करो, स्कैन करो, फिर मुझे बताओ। वेरी गुड। हमने ड्राइविंग सीट में से हट गए हैं। ड्राइविंग सीट इज इन द हैंड ऑफ द स्टूडेंट्स नाउ। स्टिल वी आर रोमिंग इन द क्लास। हम देख रहे हैं कि बच्चे जो है वही काम कर रहे हैं जो हमने इनको असाइन किया या कुछ और करने लग गए। बस इतना काम बांट के आप घूमो क्लास में, ठीक है, बजाय इसके कि आप लेक्चर प्रिपेयर करें, आप डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग निकाल के जा रहे हैं, आप सेंटेंसेस को अंडरलाइन कर रहे हैं कि मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि ये सेंटेंसेस में ये चीजें हैं। लेट देम डू ऑल ऑफ द वर्क, यू जस्ट रोम इन द क्लास। या आई होप कोई कोऑर्डिनेटर मुझे सुन ना रहा हो। या डू यू एग्री? We still have 4 minutes to go. Anyone who likes to add in something? Thank you, Mr. Ali. At least I have 1 thumbs up. At least I have. Thank you, sir. बहुत शुक्रिया. So, so far, how many of you agree with this methodology? Okay, Urdu. This is 07503219. May I have your name, please? Yes, Sana, thank you so much. Thank you. Hayatabad, thank you so much. Acha, you are worried about the attendance? So far, you agree? So far? Okay. Thank you so much, Sana. Thank you, dear.
Thank you so much. So now, do you agree that you don't have to do much of the work in the class? Let the child do it. ठीक है? उनको सिर्फ उंगली पकड़ा के वहां तक बिठा दें और उनको खुद ही किताबें दें, खुद ही डिक्शनरी बांटें, खुद ही ढूंढें, खुद ही करें. ठीक है? You just roam in the class. Thank you so much, Amir. Strongly agreed. Falahuddin, thank you. Yes, yes, yes. Falahuddin, do you teach? Do you teach? You don't teach. Okay. Okay. That's quite very, very understandable. Yeah. What about Mr. Rashid, Rabia, and Hamad, Adnan, and the maths teacher, and Mr. Irfan teaches chemistry. How you can relate these methodology with the chemistry? How many levels of cognitive domains are covered up to the secondary level? All of them. We cover all of the level because we are catering with the higher secondary school students, and a child who is already in grade 11 and 12, they are capable of higher level of thinking. So he can summarize, he can evaluate, he can create and synthesize. अभी हम आगे जाके थोड़ी philosophy भी झाड़ेंगे और इस पे बात करें. Computer science is my subject. Oh my God, I thought you're an English person. So no one as an English teacher is attending my session. This is so surprising. A maths teacher is there. Yes, please. Yeah, I have a question. I am all here to help you out, all ears, yeah? Ma'am, sometimes we discuss with teachers that how you can teach English. So just like the other subjects, we can give them some simulation, some practical websites. So let's suppose that we sometimes we say that if you want to improve your English, so you can watch videos, English movies, read newspaper. So if in class we have 40 minutes, so can we play some videos in the class? What would you suggest? Is it possible or not? Why? It is absolutely possible. If you have no idea what to do in the class, Cantup is giving you free access to the videos. You can show it to your class first. And then we have lots of resources in the description box, which has PPT as well. If you are able, you can use our resources and do it. Go ahead. If you have all of the resources. But this is what we are telling you. Being an English language teacher, we don't have edge for the stimulation. So what at the end of the day we all have? We only have a book, but we have given you such books which can talk. So you have QR code. Scan the code, play the video, use the resources, which is all free for you. So go ahead, do it if you have the resources. Otherwise, we are telling you the indirect way of teaching, how to make your class active in the class by sitting them in the groups, dividing the work among them. That is going to be very, very feasible because you're going to be passive and the child is going to be active because he has to give or complete the task within the given time because you have written the time frame on the board. Achha, do mention the time frame in the jigsaw reading. You have 10 minutes or you have 5 minutes or 2 minute के बाद कहें the time is going. 2 मिनट रह गए, 3 मिनट रह गए, 4 मिनट. तो इस तरह कर करके उनको बूस्ट करते जाएं और उनको स्कैनिंग स्कीमिंग सारी चीजें पहले बता के आप रिलैक्स हो जाएं और फिर उनको बुला बुला के उनसे सुनते रहें. ठीक है? It's 11 o'clock. I believe you have learned something. Yeah? And see you again at 11:30. Till then, bye bye, Allah Hafiz.